fridge the fuse wire melts. Right. So fuse wire has high resistance. Fuse wire should have high resistance and so that पेज नंबर क्या है सर? 0 का देख लेंगे. 150. This is 0. 150 with a 0. 1500 not possible. high resistance so that a lot of heat is produced and सर एक साथ बैठे तो किसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है? it also must have low melting point for easy सर ये पहले वाले का आंसर है. circuit break. नहीं बेटा. Information. Flow of proton constitutes electric current. True or false? False side consists of electrons. Electrons Perfect. Okay. Now the point is, if electron is flowing from left to right in a wire, so this is a wire, and we see that electron is flowing from left to right, what will be the direction of flow of current? So we are saying that here is point A, right? So if current is going from A to B, the current is going from B to A. Is that okay? So electrons are going from A to B. Yeah, electron is going from A to B. The current is moving from or going from B to A. Is that okay? Very good. A fuse wire is made of silver. No, sir. False. Alloy of lead and 50% of each. Why it is not made of silver? Because silver is high melting. And Low. low? Yes. Low resistance is first major point. Higher melting point is another reason, but low resistance is the first major reason. Okay. SI unit and commercial unit of electrical energy are same. Is it true? What is the SI unit of energy? Joule. What is the commercial unit of energy? kW, kilowatt hour. So are they same? No. No. So it's a false statement. SI unit is and commercial unit of energy is Sir, but I have a question. Bollywood. So when the current is produced at the generating station, then how the electrons must go like this now, straight ahead. Then the current comes like this. So the electrons go ahead, the current comes like this, and like that it just moves. Yeah. Good.
जो मैंने फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स का किया था ना, मेरा बहुत अच्छा, मेरा भी बहुत अच्छा था। बहुत लास्ट क्वेश्चन हुआ। Overloading of electric current in circuits can lead to an electrical short circuit. Overloading of electric current in circuits can lead to an electrical short circuit. True. Yeah. Okay. Really good. Next one, our body can pass electricity through it. True or false? True. The metallic cases of all appliances are insulated. Why our body can pass electricity? because we can get electrocuted and we can get shocked. But why do we get shocked first of all? Because we are not insulators. We are not good conductors. We are not good conductors of electricity. Huh? We are good. We are good terminal part. क्या? I don't know. Asking Because of the constituents present in the body. What constituents are responsible That's what for I'm it? trying to think. Maybe Okay, some minerals, na? So blood, Yes. iron is in our blood. Iron and yeah. water present in our body. The ions dissolved in water present in our body are the primary reason for making our body a good conductor of electricity. So, what makes our body good conductor? So, Presence of iron and water in our body. Presence of Iron and water. ions and ions dissolved in water. the ions, yeah, iron. Iron, ions. All the ions. Ions dissolved in water in our body is the reason for it behaving as conductor. The metallic cases of all appliances are insulator of electricity. Sorry? The metallic cases of all appliances are insulator of electricity. True or false? False. It's a false statement. Metals are conductors. Very good. Hello. बट मैं दोपहर में अभी बना करके भेजता हूँ। आज लेक्चर तो आप लोग का मैं हूँ नहीं, आज भी क्लास नहीं है क्योंकि वो लोग अब आज भी नहीं आ रहे हैं। मंडे से क्लास रेगुलर चालू होगा। नहीं, क्लास तो नहीं होगा, तुम्हें आना है तो आज आना 3 to 5:30 के बीच में, ठीक है? ओके, हाँ चलेगा चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट कीजिए। I'll be here only. Okay, okay. बॉटल को बॉटल क्या था? इसको टॉवल लगा दिया है बॉक्स दो बॉटल। उसने किया, मैंने कुछ नहीं किया। पूरा करने के लिए। बोला नहीं? देख 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 उसके बाद में बैठने तेरा बाल खिंचवाएगा। मैंने बोला
ये मैंने देखा था। हाँ, क्योंकि कैमरा ऊपर देख रहा होता है। और वो भी वैसा और बना। सोच यही तो सोचते हैं। कौन? Do not disturb. कब बारिश? कब बारिश? और फिर इसको सुनाइए। Yes. The next one is the metallic cases of all appliances are insulated of electricity. That's a false statement. They are good conductors. The earth wire protects us from an electric shock. That's true. It transmits the body current to earth. A switch should not be touched with wet hands. All electrical appliances in a household circuit work at same voltage. In a cable, the green wire is the live wire. Red wire. A fuse is connected to the live wire. A switch is connected to the neutral wire. It is connected to the live wire. Fill in the blank. The unit in which we pay the cost of electricity is kWh. The electrical energy consumed in a house is measured by A switch is not connected to the neutral wire. Then what is that? So the main switch is connected to the neutral wire. live. अरे क्यों उसको ये मैं तो हाथ मारूंगा तो तभी ऐसे ही आवाज आता है। अच्छा तब कर रहे थे कभी को रुकने को बोला क्या सर मैं लिख रहा हूँ सर मैं लिख रहा हूँ सेम सबको आता है सर आया सर को बोल क्या कर उसके बाद सर मैं बोल रही क्या एक्चुअली हुआ इसने बॉटल का प्लास्टिक लगा के ऐसे 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 करना शुरू कर दिया सबने ने से बोला मत कर बट फिर भी कर रही सर नहीं सर पर फिर उसके बाद सबने ने बोला कर सर आपने सुना सुनाया अपने हाथ के रेंज में मैं लिख रहा हूँ जल्दी से In a household electrical circuit, the brands are connected in dash with the main.
So can we continue with our physics class? मैं इतना जल्दी तो बोल ही नहीं सकता है। So फिर इन प्लानिंग्स कर से करेक्ट करो तो WhatsApp के मैसेज 3.6 into 10 to the power 6 का नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ। कैलकुलेट करके बता। कैलकुलेट करके बता। Basically when कोई dark sugar लेना सर बोलिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। It is connected to live and neutral wire का मतलब ये नहीं कि it is connected to the neutral wire and it is not talking about main switch. ठीक है? Main switch is a switch which is just close to the meter. ठीक है? Once you switch it off, the entire power supply in the house is going to get disconnected. वो होता है ऐसे ऊपर सब फिर ऐसे हुई That's when the light wire goes in the like normal switches which the light wire on is from. Then from which wire does the current go back? How does it go back to the main wire? Neutral. Then it's connected to the neutral. Then how is it not connected to the स्विच में लाइव वायर को इन करते हैं, दूसरी तरफ से निकालते हैं लाइव वायर को। स्विच ऑन रहेगा तो करंट फ्लो करेगा, स्विच ऑफ हो जाएगा तो करंट सर्किट ब्रेक कर जाएगा। ठीक है? यहाँ पर आता है दूसरे एंड से जो भी अपना अप्लायंस है उसका दूसरा एंड जो होता है दैट इज कनेक्टेड टू न्यूट्रल वायर। ठीक है? अभी अगर आप स्विच ऑन करते हो तो वहां से लाइव वायर में से आपके आता है और फिर आपके अप्लायंस तक आता है और अब दूसरे एंड से वो फिर निकल करके न्यूट्रल वायर में चला जाता है। तो लाइव वायर ही जाती है। लाइव वायर से ही, लाइव वायर में ही हम करते हैं। तो फिर लाइव वायर पहले सारे स्विचेस में कनेक्टेड होती है, फिर हम मेन स्विच में जाते हैं जहाँ से न्यूट्रल से चला जाता है। नहीं, देखो दो वायर्स आए आपके घर में, एक लाइव वायर है एक न्यूट्रल वायर है। लाइव वायर से पूरे घर में हमारी और पैरेलली एक न्यूट्रल वायर भी रन करते रहता है हर जगह पे। ठीक है? प्लग्स वगैरह में लाइव और न्यूट्रल दोनों रखना पड़ता है हमको प्लग में। ठीक है? स्विच जो होता है इसमें सिर्फ लाइव वायर में इसको लगाते हैं। अच्छा, क्योंकि फिर वो ऑन हो जाता है। हाँ, ये जब ऑन करेंगे हम तो एक इसमें बेसिकली डिस्कनेक्टर तो बस होता लाइव है। को बोलना होता है कि ये ऐसे ऑन करेंगे तो लाइव से करंट जाएगा, बंद करेंगे तो लाइव से करंट नहीं जाएगा। वहां पे ही ब्रेक हो जाएगा। यस, ठीक है? और इसका न्यूट्रल वाला साइड जो है दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द न्यूट्रल साइड, दैट्स कनेक्टेड टू द सर्किट, द मेन न्यूट्रल वायर ऑल द टाइम। उसमें हम स्विच डालते भी है, नहीं भी डाल सकते एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए, बट जनरली दो दो स्विचेस हम नहीं रखते हैं। सो सिंगल स्विच रखना है तो हमेशा हम लाइव वायर में डालते हैं। ठीक है? नेक्स्ट। In household electric circuit, the appliances are connected in parallel with the mains. Right. A switch is connected to the live wire. The insulated wire in red color in a cable is the live wire. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule or 3.6 megajoule. A fuse wire should have low melting point. Low melting point. Match the following. Electric power joule. Electric power watt. Watt.
The following: electrical power. Electrical power is watt. kWh is electrical energy. Electric current, ampere. Electrical energy, joule. क्या? Electrical current is ampere. Electrical energy, joule. Watt is volt into ampere. Potential difference is volt. ठीक है? Is that okay? सबने नोट कर लिया? Select the correct alternative. All wires used in electric circuit should be covered with coloring material, conducting material, insulating material. So it should be insulating material. Electrical work done per unit time is electrical power. 1 kilowatt is equal to 1000 watt. Fuse wire is an alloy of tin and lead. A fuse wire should have low melting point. When switch of an electrical appliance is put off, it disconnects the live wire. It disconnects the live wire. It disconnects the live and neutral wire. ठीक है? So in the answer said this answer is one live wire. Yes. Only live wire. So first I also when I was doing the question I also done live and neutral, but then the answer is on live wire. It is true. However, न्यूट्रल का तो डायरेक्ट कनेक्शन रहता है अप्लायंस पे, वो बिना डिसरप्शन के, तो ठीक है. और स्विच जो होता है वो लाइव वायर पे फिट रहता है. So they're saying that whenever this is switch, it's we just have to assume that only live wires. Assumption based question. Purpose of an electric meter is in houses To give the consumption. to give the cost of electricity directly, to give consumption of electrical energy, safeguard the circuit from electrical short circuit, to put on or off the mains. To give the Yes, consumption of right. So G second is the right option, to give the amount of electricity consumed or electrical energy consumed. If out of two lighted bulbs in a room, one bulb suddenly fuses, then the other bulb will glow more, other will glow less, the other bulb will also fuse, the other bulb will remain lighted and So it unaffected. should be four if provided they're in parallel connection, not in series. They are always in parallel connection, Yes. they are never in series. Yeah. So it is the fourth one. the Short, long answer questions. From where does electricity come to our home? At the power generating station, the electricity is generated at 11 kW. बोलो. It is supplied from the book. हाँ. तो और marking किया है. Everyone is not observing. सर मैं बोलूँ? अब बोलो ना, पूरा नहीं कहानी बताना है. It is a short answer, so you have to write it in one line. At the power generating station, comma. अबे तुम्हारे घर में कहाँ से आता है बेटा? Substations and generators. क्या हुआ? तू बोलना, उसका नाक टूटने वाला है, तू क्यों परेशान हो रहा है? सर मैंने पढ़ा इधर कॉपी कर लिया. 132 kV से 11 kV सिटी सबस्टेशन में होता है. हाँ, और फिर वो उससे 11 kV से 220 वोल्ट तक अपने घर पे आता है. तो सिटी सबस्टेशन का काम क्या है? हमारे घर तक पहुंचाना. अब जनरेटर 11 से 220 पर कौन लाएगा? मैं लाऊंगा.
It comes to our home from city substation. और इसमें हम और एक चीज ऐड करेंगे, स्टेशन. ठीक है. The current the potential difference is dropped or is decreased from from 11 kV to 220 volt. Is that okay? What is an electric meter? So it is a device which measures the consumption of Electricity in our household, or measure the consumption of electricity. Okay. Where is it fixed in our house? Our house or outside? With the main supply. You're the main board or just outside the house? Where is it fixed? State the purpose of kWh meter. kWh meter का purpose. This measures electricity consumption and gives the distribution. And gives the distribution. So that's right. It's not necessarily over here. Some of the distribution they both take from electric meter. For which unit do we pay our electricity bill? How can you check just by seeing the meter whether electricity is in use or not? कैसे पता चलेगा यूज हो रहा है कि नहीं यूज हो रहा है? If those logs are showing the number, because there is a kWh meter which helps us read. So the clocks are showing the number consumed. Then so by reading it properly, which move according to consumption. I'm not getting the word counter. That's why counter. देखो दो तरह के मीटर होते हैं हमारे पास, एक तो एनालॉग होता है, दूसरे डिजिटल होता है. डिजिटल वाले में नंबर चेंज हो रहा है तो फिर वी कैन से दैट थिंग्स आर चेंजिंग. और एनालॉग वाला जो होता है उसमें एक बिल होता है जो कि घूमता रहता है, तो बंद हो जाता है, बंद हो जाता है. हाँ. If no electricity is used, then will this meter show all the consumption of the electric energy will just not move? हाँ, it will not change. But it will still show the consumption. हाँ, जितना हुआ है वो तो दिखेगा ना. ठीक है, वो हमने बंद करके चेक किया था एक बार अपने घर में, and it stopped. I mean सारे स्विचेस को ऑफ कर दिया हमने. नो अप्लायंस. हाँ तो बात करना. अजीब है, बेवकूफ इंसान है. जब बात नहीं करना होता है तो बैठ के बात करेगा, पूछता है. हाँ, सारे स्विचेस अगर हम ऑफ कर देते हैं तो यस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टॉप्स इन ऑल द अप्लायंसेस एंड द मीटर रीडिंग विल स्टॉप अकॉर्डिंगली. 2799. 2799. Figure 8.1. 8.5 8.15 shows the reading on the dials of the meter. State what is the reading. 8.15 2799. है किधर? तो पहले क्लॉकवाइज होता फिर एंटी क्लॉकवाइज होता है. वो तो दिख जाता है नंबर रेंज के. 7 अबे 2788 है ना, 99 कैसे? 27 हाँ सर 88.
हाँ? 7 8 अरे सर सर 8 कैसे? क्योंकि Sir- सर 8 से 9 पे जाना है तो 8 है और नेक्स्ट वाले में भी 8 से 9 पे अरे जाना फिगर है नंबर तो क्या चलिए। 8 में लिखा मैंने बोला कुछ और है। कोई बैड 8 8 नहीं, हाँ ठीक है, 8 9 बोल सकते 8 हैं। 9 2 7 8 9। सर तुम दोनों आंसर्स करेक्ट हो गए क्या कौन से? 7 8 नहीं 8 8 नहीं है बेटा, 8 9 ही है, गलती से 8 8 बोल दिया मैंने, वो 9 पर प्रॉपरली इंडिकेट कर रहा है। लास्ट वाला जो है दैट इज प्रॉपरली ऑन 9। मुझे भी शुरू में लगा बट फिर मैं देख रहा हूँ तो वो कंप्लीट 9 है काइंड ऑफ। अब उसके लिए हम उसको 8 नहीं बोल सकते, that will be too harsh. हाँ. One day the meter reading was 7643 unit, while on the following day it was 7657 units. What is the consumption of electricity in a day? So difference of the meter reading, it will be 14 units. ठीक है. It is 14 units per day. अच्छा, इसमें एक चीज और दिया जा सकता है, वन डे का रीडिंग 7643 है, अदर डे की रीडिंग 7657, ठीक है. तो मंथ में कंजम्पशन कितना होगा ऑन एवरेज? सो इट विल बी 14 पर डे हो रहा है तो 14 into 30, दैट विल बी 420 यूनिट्स पर मंथ. बात समझ में आ रही है? सो ये एक थोड़ा सा एप्लीकेटिव क्वेश्चन हो सकता है. 7000 भी ओवरऑल सिर्फ उस डे का नहीं है, वो पूरा कैलेंडर का रिजल्ट है। इतना ज्यादा कैसे? अरे वो कितना है उससे मतलब नहीं है हमारा, आज के दिन में डिफरेंस कितना है वो पूछ रहा है. आज के दिन में अगर आपके क्वेश्चन में आज के दिन में उतना डिफरेंस है, आपको बोल रहे हैं अज्यूम कर रहे हैं कि एवरीडे उतना ही होगा। ये तो हर दिन वही काम तो हम करेंगे ना घर में. तो क्या पता कोई फेस्टिवल हो रहा हो। हाँ, हो सकता है बिल्कुल, बट ऐसा नहीं दिया हुआ है तो हम ये अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि वो उस दिन हमारे यहाँ फेस्टिवल था. ठीक है, बाकी दिन हम लोग कब यूज करते हैं. कंप्यूटर ज्यादा देर खुद हाँ बोलो, तुम्हारा कोई आर्गुमेंट? A source of potential difference V volt sends current I ampere in a circuit for time t seconds. Write expression for A, electrical energy supplied by the source, and B, electrical power spent by the source. बोलिए. The electrical energy will be volt into current into time. VIT. Yeah, VIT. Electrical power spent will be VI. If charge was given, then it would be volt into charge. Right. I into T is charge. ओए बेवकूफ, फॉर्मूला चाहिए था ना. फॉर्मूला बोल रहा हूँ ना, नोट कौन करेगा? सो टेक्स्ट बुक की यहाँ पर भी है, एक ग्रीन बॉक्स में सारे फॉर्मूलाज हैं वो. फॉर्मूलाज का रेट कोई देखता नहीं है. मैं इससे देखता पढ़ती है बहुत हूँ. लोग. अबे तुम नहीं देखते हो इसका मतलब कोई नहीं देखता है. एग्जैक्टली सिद्धार्थ, मीन कोई बात नहीं है बेटा. मैं बी इन योर ब्लिस. नहीं कर पाओगे उसको। हाँ थोड़ी वेल। अरे बस ड्राइंग कर रहा है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेम द यूनिट इन विच यू पे द कॉस्ट ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल. हाउ इज इट रिलेटेड टू जूल? चलो 8th वाले का एक आंसर लिख देता हूं मैं. 8th वाले का आंसर है ए का एनर्जी इज इक्वल टू वोल्ट सर आई नो. इनटू Sir, I know, sir. करंट. कोई बात नहीं है बेटा. आंसर कर चुके। इनटू टाइम. नाइन्थ क्वेश्चन पे था ऐसा. इतना ऐसा भी टू बी. अब तो नाइन्थ वाले का 8 का 8 चल रहा है. नाइन्थ चल रहा है. सर सर ने- लिख रहे हैं. हाँ, नहीं कौन सा होगा। नाइन्थ? क्यों लिख रहे हैं? लिखे हुए अच्छा है. सर हम किसी ने ड्राइंग करी है.
क्या हो गया? भाई देखो थोड़ी Name the unit in which you pay the cost of your electricity bill. How is it related to joule? नहीं बेटा, आप लोग बात करिए। आधे घंटे वेट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग को मौका मिलेगा बोलने का। अरे सर ये वाला क्वेश्चन आंसर 3.6 into 10 raised to 1. Very 10 good. into 6 into So it is kWh and 1 kWh is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. ठीक है? Enjoy talking to each other. कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे तुम लोग को बात करने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं। If an appliance of power P watt is used for time T hour, how much electrical energy is consumed in kWh? सर ये कौन सा वर्ड है kW? 1 सेमीकोलन। अरे सेमीकोलन के आगे 1 है 1 3.6 into 10 to पावर If an appliance of power P watt is used for time T hour, how much electrical energy is consumed in kWh? P in watt है, तो energy consumed will be P upon 1000 into T in hour. very good. Energy is equal to P upon 1000 into T in hours. This much kW. अच्छा P P upon 1000 into T. What is an electrical fuse? States its purpose in household electrical circuit. What is electrical fuse? मैं बता रहा हूँ पूछ सकता हूँ कौन सा क्वेश्चन अभी? क्वेश्चन नंबर 10 11 अभी बस किया। Oh, electric fuse is a device which is used to limit the current in an electric circuit. बोलना क्या था? So, बोला आंसर मेरा correct answer. Hello. It safeguards us from electric shocks. It safeguards subjects and the Hey, circuit from being damaged if the current in the current circuit exceeds. टोपी वाले टोपी वाले Yes. The next question is, what is an electric fuse? I just answered. कहाँ किया तुमने? जब आप सुन नहीं रहे थे तब। हाँ तो जब मैं सुन नहीं रहा हूँ electric fuse क्यों बोला? device is used to limit the current in an electric circuit. Yes. हाँ बोलो। बोला ना? हाँ देख लो पहले, याद कर लो फिर बोलना। तुम बोलो। The electric fuse is a device which is used to limit the current. ठीक है, बहुत अच्छी बात। Save the devices and to switch from if the current exceeds. हाँ इसका From damaged devices and appliances. अब दूसरा इंसान बोल रहा है तो उसको बोलने दो पूरा। हाँ ना, चलो। It safeguards the circuit and appliances from being short circuited or being destroyed from electric fire due to excess heat. मैंने इधर नहीं बोला। मैंने बोले इंस्ट्रक्शन से थोड़ी बोला।
बोलते आप अभी सुनते नहीं हो। हाँ सर इसने इसमें से ही बोला था पता है मुझे सबका पता है कौन कहाँ से क्या बोल रहा है। बोला कैसे था कैसे क्यों? बुक में लिखा हुआ है इसलिए। हाँ वेरी गुड। चलिए हाँ फिर से बोलिए आप इताइसा क्या बोलना चाह रही थी। बोलिए। इलेक्ट्रिक फ्यूज मैं टेक्स्ट बुक से याद करके बोला है। हाँ हाँ बोलो ना, देखते हैं कितना याद हुआ है An तुमको। electric fuse is a device that limits the current in an electric circuit. क्या करेगा करके? वो Protects from damage. If the current is yeah, what she said, yeah. क्या क्या? it protects from damage if the current exceeds and the voltage fluctuates. Yes. वेरी गुड। So the metal strip is an example now. When it's damaged, it melts. We have to replace it with a new one. States its purpose in household electrical circuit. State one property. Property. अबे सपना देख रहा है तू। अच्छा नहीं। What is it? State its purpose. Fuse wire is an alloy of lead and tin. प्रॉपर्टी नहीं बेटा, पर्पस पूछा गया है। So but property है question. कहाँ नहीं प्रॉपर्टी नहीं है? 11th का ये है। First 11th। Oh yeah. Very good, very good. Because. And its purpose in the household electrical circuit. If the wire is. तभी सेट है ना राइट में। कहाँ सेट किया? If the insulation on the wire of the cable is wiring breaks, the live wire comes in contact with neutral wire which results in कहाँ से पढ़ के बोला? क्या क्या बोला? और रीडिंग करिए एक आध दो लाइन, देखते हैं आंसर आ गया कि नहीं। नहीं है। Maximum current passes through the wire, which can cause burning of the wires. आप सो जाइए वहां पे, नीचे बिस्तर लगा दूं, ऊपर जाइए, ड्रॉर में रखा हुआ है एक चादर मोटा सा, लेते आइए नीचे बिछा करके सो जाइए। हाँ जाइए। सर उसको मेडिटेट करना है। मेरा सर उधर लगेगा। Purpose of fuse है, मैं यहाँ बना सकते हैं जो purpose of fuse के अंदर वो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बहुत सारे दिए हुए हैं, पर I think purpose of fuse जो उसकी properties दी हैं वो यहाँ पर आ गई। प्रॉपर्टीज नहीं बतानी है, पर्पस ही बताना है। If the insulation on the wire of cable used in wiring breaks the live wire. ठीक है, तो मतलब हम लोग को पढ़ने आता है। गुड, आई एम हैप्पी। कोई नहीं कर सकता, अगर कर सकता होता तो उनको शर्म आती है बोलने में, बंद करके। हाँ समझ नहीं आया। मैंने ये बोला कि अगर इनके अंदर एबिलिटी होती वो कर पाने की, तो अभी तक मेरे परमिशन का वेट कर रहे होते। दे आर इनकैपेबल ऑफ डूइंग इट, मींस दे आर नॉट डूइंग इट। Answering questions without looking at the answer. Okay. State one property of material of a fuse wire. बोलो। It is short and thin, and it has no melting point. हाँ ठीक। शॉर्ट एंड थिन क्यों होता है? Sir, हाँ बोलो बेटा। sir, it breaks the circuit and melts. अबे low melting point. So that it melts quickly. So that it क्यों, मतलब पतला होगा तो जल्दी मेल्ट कर जाएगा। पतला so it's short so that it melts quickly. हाँ, और थिन क्यों है? हाँ बोलो। सोचा नहीं, जब सोचा बताया था, पढ़ाया था, उस समय बताया था और लिखवाया भी है। वो मेरे को याद नहीं है ना। अरे वही तो पॉइंट है ना कि पढ़ते नहीं है हम लोग ना। मैंने पढ़ा तो उसके बाद भूल जाती है। तो इससे कैसे क्वेश्चन मेल्ट होगा? तो फिर थोड़ा सा ही मेल्ट, मतलब जैसे थोड़ा सा ही गिरेगा, खराब नहीं करेगा उस पानी को। सर does it have something to do with current? Sir, using अबे इलेक्ट्रिसिटी है तो करंट से कुछ ना कुछ तो लेना देना रहेगा ही। सही है। Sir, if the wire is बड़ा, मतलब thick और बड़ा, that means
उसमें से करंट ज्यादा इजीली फ्लो होगा, छोटू सा होगा तो पता नहीं फ्लो कब होगा। High resistance. Yes. In order to ensure high resistance, the diameter is made as thin as possible. Thinner the wire, higher will be its resistance. Number 150. So why? Why would its resistance be higher? Resistance is equal to resistivity into length upon area. So resistance is inversely proportional to cross-sectional area. Cross-sectional area जितना कम होगा उतना resistance ज़्यादा होगा. Is that okay? Very good. इसलिए उसको क्यों क्या रखते हैं? Thin. और देखो तुम लोग वो प्रॉपर बुद्धू बच्चे हैं, पढ़ना लिखना कभी नहीं चाहते हो और गलती से मैं ज्यादा पढ़ा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर हो जाती है ग्रेट मिसमैच. व्हाट इज द ग्रेट मिसमैच? हाँ, गलती से मैं ज्यादा पढ़ा देता हूँ. एग्जैक्टली. मैं वैसे लोगों को पढ़ा रहा हूँ जिन लोगों को पढ़ने की बिल्कुल ही इच्छा नहीं है. ये मेरा दुर्भाग्य है. और भी प्रॉपर्टी बोली है ना? हाँ, कम से कम दो तो बोल दो. बोलो. It measures about 200 degrees Celsius and it's connected in series with the fuse wire. चलो कोई नहीं, यहाँ पर अभी लिख दिया, इसको नोट कर लो क्योंकि याद तो रहेगा हम लोग को नहीं. ठीक है, तो कम से कम किताब कॉपी में लिख लो. रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया. इज दैट ओके? और हाई रेसिस्टेंस क्या इंश्योर करेगा? नहीं बेटा, अब और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं. The smaller the wire and the thinner the wire, the higher the resistance. स्मॉलर वायर से रेसिस्टेंस कम होगा. इट इज थिनर, इसलिए उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है. लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, तो लेंथ छोटा होगा तो रेसिस्टेंस कम रहेगा और एरिया कम रहेगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा रहेगा. बोलिए बेटा. नहीं नहीं, ये सारी चीजें आप लोग के लिए नहीं है, आप लोग खाली इतना नोट कर लो ना. नहीं है बेटा. कहाँ पे? 1/a है. यहाँ पे 1/a है. फिर से देख लो ऊपर ऊपर, यहाँ पे 1/a है और यहाँ पर L/A है. और उसके पहले क्या? उसके पहले इसको बोलते हैं रो, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. बोलिए बेटा. क्यों? Yes बेटा, I'll allow you. Wait, let me. चलिए आगे बढ़ते हैं. नोट हो गया? नो सर. वेरी गुड. नो सर. हो गया. हाँ, हो गया. name the material of a fuse wire. Plus. It's made up of alloy, lead and tin, which constitutes it has 50% of each metal.
It has a medical 100 degrees Celsius. क्या? Then and that, 14. Can we use copper wire as a fuse wire? Sir, we cannot use a copper wire as a fuse wire because the melting point of a copper wire is much higher. Sir, can I mention it has low resistance? It has a melting point of 1080 degrees Celsius. This is very high, and the melting point of lead is 200 degrees Celsius, so there is a lot of नहीं ठीक है, वो इंफॉर्मेशन 1080 वाला दे सकते हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और अदरवाइज द गुड आंसर विल हैव द mention of low resistance and high melting point, और ब्रैकेट में आप equal to 1080 डाल दोगे, that is good. How does a fuse protect the electric wiring or an appliance from being damaged? How does a fuse protect the electric wiring or an appliance from being damaged? हाँ बोलो. Sir, in the insulation of the wire, there is a problem there. The live wire and the live wire and the what is the live wire? No. अबे कहाँ बीच में बोलते रहते हो तुम? Sir, live wire and the neutral wire. Sir, the live wire and neutral wire come in contact, which results in a short circuiting, which results in more heat, and also due to very high voltage fluctuation, it can come, more heat can come. So when the more heat, due to excessive the fuse wire, when the more heat goes in the fuse wire, it melts. When more current or high current than specified enters into fuse wire, उसके आगे बोलो. The fuse wire melts. Or enters नहीं, actually passes through fuse wire. The fuse wire melts because of its excessive heat generation. Low melting point and high resistance, and there are gaps between the middle, so the circuit is incomplete. The circuit breaks. Burnout के बाद सीधे circuit breaks. Disconnecting the supply of current, saving the appliances. Proper words में बोलने का करना. Yes, obviously. That is the most important task. Anytime. अभी है और आगे भी वही रहता है. If you understand the concept, that is the most. I mean, that is the next challenging. Good. Which fuse wire is thick? 5 ampere or 15 ampere? 15 ampere. 5 ampere. अभी बताया कि रेजिस्टेंस कम रहे. Sir, 15. एक सेकेंड, बीच पे एम्पियर दिया हुआ है ना. अच्छा, रेजिस्टेंस नहीं, ओमेगा नहीं है. ठीक है. 15 एम्पियर विल बी थिकर. ठीक है, ठीक है. मुझे ओमेगा लगा इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया. 15 एम्पियर वाले में से ज्यादा 15 एम्पियर, right, because lesser will be the resistance. Thicker the fuse wire, lesser is the resistance, or thicker the wire is, lesser will be its resistance. So it won't be enough for the higher rating. हाँ. थिक वायर जो होगा, that will be good for higher rating currents, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका कम होगा तो हीट जनरेशन कम होगा. ठीक है. तो कैसे समझना है? Can you explain this point again? Yes. करंट ज्यादा होगा तो हमको चाहिए कि हमारे वायर में रेजिस्टेंस कम हो. Okay, I got it. ठीक है. तो इसके लिए मुझे मोटा वायर चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मोटापा. तो सर इसलिए हम कॉपर वायर यूज नहीं करते क्योंकि वो बहुत पतला होता है. क्या? इसलिए हम कॉपर वायर यूज नहीं करते, वो बहुत पतला नहीं होता है. बेटा, कॉपर वायर यूज करते हैं, पतला वाला कॉपर वायर नहीं यूज करते, मोटा वाला कॉपर वायर यूज करते हैं. हाँ बेटा, बिल्कुल आता है. क्या हुआ? सर ये सेट कॉपर यूज करते क्योंकि वो पतला होता है, बट पतला वाला तो यूज करना होता है वायर. नहीं, कनेक्शन वायर की बात कर रहा था उस बच्चों, उसकी भावनाओं को समझो. And serious miniatures of
अरे यार यही तो एक आंसर जो मुझे आता है। Write वो तो ठीक है, write the full form MCD. It is superior. वो बताया ना मैंने नीचे सफेद तरीका. So MCD is superior to fuse wire because when once used, fuse wire cannot be used again, and the whole switch needs to be changed. Whereas MCB can be used again and again because it just strips when there is. And you can just turn the switch on. And sir, it is safer also because it switches the circuit off in nearly 25 milliseconds. Oh God. Yes, good. और दूसरा भी एक फायदा है, वहां पर फ्यूज वायर के केस में बर्निंग इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, तो बर्निंग एंड मेटल्स आर नॉट सेफ. हाँ, ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू. एक्चुअली होता है क्या है कि फ्यूज वायर जब बर्न कर रहा होता है, देयर इज पॉसिबिलिटी कि आजू बाजू में जो कुछ मेटालिक चीजें लगी हुई है वो भी जल सकती है, ठीक है, देयर इज पॉसिबिलिटी. एमसीबी में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो, ठीक है. With which wire, live or neutral, is the fuse wire connected? Live wire. What do you mean by short circuiting of a circuit? When the insulation is not proper and the live wire comes in contact with the neutral wire, then the excess heat is then there is excess heat. देखो, आपका आंसर का शुरुआत ना इंसुलेशन वाले से नहीं होना चाहिए था. सेकंड सेंटेंस जो आपने हाफ सेंटेंस के बाद बोला ना, वहां से चालू करना चाहिए था आपको. हाँ, when the live wire comes in contact with neutral wire leads to short circuiting. It may happen because of excess heat. Excess heat or voltage fluctuation. वो बाद में, वो थर्ड सेंटेंस. पहला वाला सेंटेंस जो बोला था ना, वो सेकंड वाले पे आएगा. You do poor insulation. The poor insulation. It may could happen because of poor insulation or other reasons. And then जो third line है वो third line. It can also happen because of voltage fluctuations due to excess heat. ठीक है? This is what I mean. Good. So see, idea क्या होता है? Like आपका आंसर जनरली कंप्लीट रहता है. Order of sentence जो होता है ना, that is going to depend upon what question is being asked. तो पहले आंसर फिर उसके बाद नेक्स्ट. हाँ, जो की आंसर है मेरा वो फर्स्ट लाइन होना चाहिए, ठीक है ना. रीजंस अगर पूछा गया होता तो यू शुड हैव स्टार्टेड विद व्हाट यू सेड, ठीक है, और फिर बाद में बीच में डेफिनेशन डाल दिया तो दैट इज अ गुड आइडिया, ठीक है. बट यहाँ पर हमसे काइंड ऑफ डेफिनेशन या रीजन पूछा गया है, तो कॉज क्या है उसका, वो हमारा सेकेंडरी आंसर हो जाता है, ठीक है. गुड. Figure 8.16 shows two ways of connecting the three bulbs ABC to a battery. Name the two arrangements. Which of them do you prefer to use in a household circuit? Yes. So the B1 figure is connected in parallel. So when we use it in our houses, then even if one of the bulbs is not working, then it's not necessary the others will also not work. हाँ, ठीक है. If one is non-functional, the others will keep functioning the way they were doing earlier. ठीक है. However, in correction A, if one is non-functional, the rest of all will become non-functional automatically. So, as a question is also related to this one. Which one, beta? 22nd. How are the electrical appliances connected in house circuit? In series or in parallel? In parallel. Give reason. The same reason. In household electric circuit, if one bulb is fused in a room, the other bulb keeps glowing. Explain the same reason. अबे तीनों का same ही reason है. क्या तीन बार बोलोगे? State the voltage at which electricity is supplied to our houses. 220 volts. Very good. Draw a label diagram with necessary switches to connect a bulb, a fan, and a plug socket in a room with the mains.
In what arrangement you will connect them to the mains? नहीं डायग्राम घर पे बना लेना। हाँ लिखा हुआ है जो कि हम लोग कभी लाते नहीं है, वो रहने दो, घर पे रखा हुआ है तो कोई फायदा नहीं है। और गुड गुड, मुझे क्या पता करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है, तुम बोली तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि करा हुआ होगा। हाँ मेरे लिए तो सारी चीजें अजम्पशन ही है क्योंकि कोई सबमिट तो किया नहीं है। मैं लाती हूँ नेक्स्ट क्लास। हाँ ला ना, मेरे पास 2 बनाए बट बनाए तो है सर। हाँ तो अच्छी बात है ना, मैंने बट देखा नहीं ना। हाउ कैन आई कंफर्म? हाँ वही वाला बना देना है बेटा, उसी को कॉपी पेस्ट कर। क्या हुआ? हाँ state the color coding of 3 wires in cable used for wiring and household electrical circuit. बोलो, हाँ बोलो। सारे 3 वायर का कलर बता देना। हाँ सर लाइट वायर है रेड। अबे रेड। मैं भूल गई। उसको छोड़ दे, तू अपना बोल। सारे कलर वेरी गुड, बोलो कलर कोडिंग ऑफ वायर। So green, Yellow and red. Sir, रुक जाओ बेटा, आ रहे हैं तुम्हारे पर भी, कहीं बेचैन हो रहे हो। हाँ ठीक है, हाँ रेड रेड। हाँ क्या? बोलिए मैं क्या बोलूं? कलर कोडिंग कौन से वायर का? सबका 5 गो होता है। अच्छा ठीक है, बोलो। रेड लाइट वायर, हाँ ब्लैक होगा न्यूट्रल, हाँ और ग्रीन होगा। अब ब्लू और येलो। ब्लू भी तो न्यूट्रल हुआ ना? अच्छा ब्लू भी न्यूट्रल होगा, अब ब्लैक भी न्यूट्रल होगा। और ग्रीन और येलो। ग्रीन और येलो, ग्रीन और येलो, ग्रीन और येलो। हाँ नहीं यार, कोई बात, बहुत पढ़ाई कर लिए तुम। हाँ बेटा बोल। अच्छा रेड और ब्राउन दोनों लाइट वायर। रेड और ब्राउन लाइव होगा, और ग्रीन और ब्लैक ब्लैक और ब्लू और ब्लैक। हाँ ब्लू और ग्रीन का क्या होगा भाई? सर पूरा आ गया, सर पूरा आ गया, सर पूरा आ गया। नहीं नहीं तुम रहने दो, हो गया टाइम था। बोलो बेटा। Red and brown is light wire. Black and light blue is neutral wire. Green and yellow is light wire. आंसर बोल रहे थे अभी। मेरे को 2 आते थे, एक assumption था। सर ने मुझे आंसर बता दिया था। 3 बेसिकली 2 आते थे और तीसरा वाला दिस assumption। प्रूव्स कि आप किस लेवल के बुद्धू बच्चे हो। ठीक है, ग्रीन एंड येलो अर्थ, लाइव इज रेड एंड ब्राउन, रेड और ब्राउन, न्यूट्रल, अरे तू एसी पे ही चढ़ जा। हाँ न्यूट्रल कौन सा रहता है? ब्लू एंड ब्लैक, येलो एंड ग्रीन। अब याद हो गया। अर्थ, येलो, येलो ग्रीन येलो, सर आधा घंटा बचा, प्लीज बेस थोड़ा डिक्रीज कर दो। आधा घंटा टाइम हो रहे। अभी आधा घंटा नहीं बचा है, 10 मिनट। 26 why is metal covering of an electrical appliance is earth? Why do we earth? क्वेश्चन को पढ़ने में कितना जल्दी इसको आंसर। तो 22 से 25 होमवर्क है ना? Sir, she wants to answer.
अरे क्यों कर रहा है? Sir, I know the answer. I read it for proper language. I know what you answer. Can I say? सर आपने बोला जब आप सुन रहे हो तभी आंसर करना है। हाँ मेरे भाई। Oh my hair. Sir, answer बोलो. बोलो. Sir, the metallic outer bodies of the device of the electrical appliances like geyser, oven, and refrigerator is connected to the earth wire. Because if the insulation wire breaks, the live wire comes. If the insulator breaks, the live wire comes in contact with the metallic body, which can lead to a fatal shock. So, while connecting the earth wire, the current is sent transferred to the earth, which protects us from the shock. She's absolutely right. She said everything word to word. See. तो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया था ऑलरेडी. विल बी स्टार्टिंग विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नाउ. सर स्टैटिक का कितना टाइम लगेगा? स्टैटिक करने में हम लाइट शुरू करेंगे. क्यों? नो लाइट नेक्स्ट टर्म है. इस टर्म में तो वो भी सर और कुछ नहीं है, वो काम. अरे मुझे पता है, बट स्टैटिक पढ़ के खत्म करो. सर आप हमें पहले लाइट से मैं पहले लाइट कर. नेक्स्ट टर्म अभी तक टर्मिनल भी नहीं हुआ. अरे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सर नेक्स्ट क्लास करा सकते हैं. बहुत सैटरडे हो. स्टैटिक एनर्जी तो बहुत सैटरडे हो. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पता नहीं कराएंगे, लेकिन लाइट एनर्जी मुझे नहीं पता है उनको कराना है कि नहीं कराना है. मुझे कराना है और तुम लोग को पढ़ना है. इज इट क्लियर? वेरी गुड. मैं पढ़ने के लिए रेडी थी. हाँ. तो मैंने कुछ बोला ही नहीं. सर मैंने कुछ सुना ही नहीं. हाँ. कोई बात नहीं बेटा. कितना टाइम बचा है जाने के लिए? अभी 10 मिनट और है. 10 मिनट में हाँ बिल्कुल. 10 मिनट में पूरा स्टैटिक एनर्जी खत्म. यूटिलाइज टाइम अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा. उसके बाद उसके अगले लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग विथ लाइट. क्या? टर्मिनल्स के तो क्वेश्चन भेजूंगा ना मैं अभी. उसको सॉल्व कर करके लाना है और उसका डिस्कशन भी करूंगा. उससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या लेना देना. क्या? I'll send the paper. 3 चैप्टर है. I'll send 4 papers. हाँ. The electricity which we use in our daily life for various purpose such as to glow a bulb, run a fan, etc. is due to motion of charge or electrons. It is called current electricity. Now we shall consider the electricity at rest or static electricity. The word electricity came from Greek word electron, which means amber, a kind of resin. About 2500 years ago, a Greek philosopher
Thales found that when amber was rubbed with wool, it acquired property of attracting small pieces of paper or cork. Later on, Dr. Gilbert found that besides amber, there are many other substances such as glass, plastic. What's amber? Substance होता है बेटा, मुझे नहीं पता है. Amber rocks भी होते हैं ना? Rocks वाला मुझे पता है, but इसमें I have a question. What causes rocks to attract particles? बताएंगे ये लोग ना, थोड़ी देर वेट करो. हाँ बोलो. रेसिन होता है बेटा, बेसिकली नेचुरल हो सकता है या फिर मैन मेड. हाँ इट्स कुछ मैन-मेड या नेचुरल होता है. हाँ इट्स पल्पी थिंग. हाँ योर आंसर इज ग्लूई पल्पी थिंग होता है. ट्रीज में से निकलता है या फिर गम जो आपने बोला, हाँ हम बनाते भी हैं उसको, दैट इज रेसिन. तो रबर में से जो को बनाते हैं. राइट, रबर ट्री से जो पल्प निकलता है उसको भी बोलते हैं. प्लस और भी जगह से जहाँ पल्पी सब्सटेंस होता है, एम्बर का पल्पी सब्सटेंस. काइंड ऑफ पल्पी सब्सटेंस. अच्छा, रेसिन पल्पी सब्सटेंस को भी नहीं बोलते, उससे बनने वाला फाइबर जो होता है ना, उसको रेसिन बोलते हैं. ठीक है. सबसे पहले तरह मुझे क्या पता है, तो पैन ही मूव कर सकती है कैसा मारेगी मेरे को. सर Beside, हाँ very good. Beside amber, there are many other substances such as glass, plastic, nylon, hard rubber, sealing wax, ebonite, etc., which also show the same attractive property. The substance which acquires the attractive property is said to be electrified or charged. When an object made of a substance like glass, plastic, ebonite, amber, nylon, hard rubber, etc. is rubbed with wool, fur or silk, it acquires an electric charge due to friction. हाँ बोलो. What is ebonite? मैं ebonite rod कैसे बताऊं आपको? और व्हाइट होता है, व्हाइट या ब्लैक कलर का. हाँ व्हाइट और ब्लैक कलर का होता है. तो वो वायर्स को साथ में जॉइन करने में होता है ना. Google. Nice. Images चाहिए. This is not ebonite. सर अच्छे से रब कर. Oh, ये क्या कर रहा है? Google what? ये क्या कर रहा है? तो Google ने तो खुला हुआ है. नहीं वो भी है. तो बिल में सर्च कर. अभी देखना. Oh my God, ये तो सही में ये तो गलती से सही में आ गया. तो गलती से सही में हुआ सर हो रहा. देख दोनों अच्छा वर्तनाई ओके. देख दोनों हो गए. सर दोनों चिपक गए. Okay. The object is said to be charged and it acquires the property to attract small pieces of paper, leaves or cork. This can be demonstrated by following activity. Activity 3. Take a plastic or rubber comb. Bring it near the small bits of paper lying on a table. You will observe that comb does not attract the paper bits. Now rub the comb on your dry hair. Again bring it close to paper bits. You will observe that the comb now attracts the paper bits. Thus, the plastic or rubber comb acquires the attractive property on rubbing it with dry hair due to friction.
Next activity, place some. So basically, if we are rubbing the comb on our hair and then placing it in front of or on top of bits of paper, it's going to attract those small pieces of paper towards itself and stick them with itself. What is this? Sir? हाँ बोलो बेटा. Oily होता? हाँ ऑयली होगा तभी, नहीं होगा तभी. ऑयली होगा तो ज्यादा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आएगी उसमें, कम होगा तो कम आएंगी. यानी ऑयल के होने से प्रॉब्लम नहीं होती हमको, इनफैक्ट वो प्रॉपर्टी बढ़ती है. हाँ अबे क्या कर रही है? सर ने बोला करना. सर हो भी रहा है. Sorry. दिखा रही. पिक्चर में दिख रहा है. एक्सपेरिमेंट करने के पिक्चर दिया हुआ It's just fake है. हम लोग रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं. Sir, continue. Activity 4, place some small bits of paper on a table. Take a plastic pen or a plastic rubber and bring it close to the paper bits. You will notice that the pen or the ruler does not attract them. Now rub the same pen or ruler with the wool and again bring it close to the paper bits. You will observe that pen or ruler now attracts the bits of paper. Thus, the pen or ruler acquires the attractive property on rubbing it with the wool due to friction. Now, the next activity क्या हुआ? Friction का क्या हुआ? सर जब ये इसमें था प्लास्टिक पेन को वायरल भी आता है तो वही क्यों किया? तो वुल हेयर से ही बनता है बेटा. हाँ 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 बेटा नहीं पता है क्या? अच्छा सॉरी. स्पेसिफिकली वुल क्यों बोला है? हेयर क्यों नहीं बोला है? अरे बारिश मेरे को तुम एक नई किताब लिखना उसमें वुल एंड हेयर दोनों लिख देना और उसमें और भी स्पेसिफाई करना ह्यूमन हेयर कैन आल्सो डू दिस. यस. ठीक है, गुड. हाँ बोलो. तो बेसिकली फ्रिक्शन स्टोर होता है उसमें. नहीं ना. नहीं. तो क्या स्टोर देख कुछ अभी अपना बुद्धि मत लगाओ. मैं पढ़ाऊंगा, वेट करो. बुद्धू सब. टेक अ ग्लास रॉड एंड अ पीस. जो बताया गया वो देखो और आगे उसका रीजन बताया जा रहा है आप लोग को. डोंट वरी. और नहीं भी बताएगा तब भी मैं बताऊंगा व्हाट इज हैपनिंग इन द ड्यू कोर्स. अपने नोट्स का एक पार के रखा. Take a glass rod and a piece of silk cloth. Hold them close to small pieces of paper. None of them will attract the pieces of paper. Now rub the glass rod with the silk cloth. Bring one by one the glass rod and cloth slightly above the bits of paper. You will observe that both glass rod and silk cloth attract the pieces of paper. Is that okay? दोनों attract करते हैं. क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है. खाली ये पता चला तुमको कि दोनों अट्रैक्ट करते हो, उसके अलावा क्या समझ में? ये समझ में नहीं, दोनों अट्रैक्ट बस गुड. अब बोलो. और समझाया ही क्या? प्रोडक्शन क्या हो गया? एगोनाइट का पेन भी बनता है. हाँ क्या प्रॉब्लम है? गुड. क्या बनता है? Take a rubber balloon, inflate it, bring the balloon in contact with the wall and withdraw your hand gradually. You will find that balloon falls down. That is, it does not stick to the wall. ठीक है? Now rub the balloon with wool and again bring it in contact with the wall and withdraw your hand gradually. You will find that the balloon now sticks on the wall. This shows that the balloon on rubbing with wool gets charged due to friction and therefore it sticks to the wall. Any query? Bolo. So what happens if there are wool on the wall and then क्या फिर से बोलो. wool on the wall? So what happens if there are wool on the wall? Does the wall get charged? भूल का वो. Wall get wool.
इट्स बिट ट्रिकी। उस चार्ज तो होगा वो भी, देयर इज नो डाउट इन दैट, बट वो चार्ज काफी डिस्पर्स्ड रहेगा नंबर। यस, ठीक है। सर अगर छोटा इसलिए सा उसका खेल लेंगे तो? इफेक्ट, हाँ तो छोटा सा ही रबर, छोटा सा ही ले रही है ना, नहीं सर, तो वो काम कर रहा है। ऐसा कुछ खींच लेंगे तो? क्या? What causes these things to attract? आ रहा है, बेचैन ना हो तो, ठीक है। This shows that the balloon rubbing with balloon wool gets charged due to friction and therefore it sticks to the wall. Now take two such balloons and rub both of them with the wool. Bring the balloons close to each other. Both will move away from each other. That is, both will repel each other. ठीक है? The above activities shows so that an object can be charged by rubbing. If a glass rod is rubbed with silk, it will attract small bits of paper. Similarly, if an ebonite rod is rubbed with fur, it will also attract small bits of paper. However, a charged object not only attracts small bit of paper. अरे फर्क क्या अरे फर ओ Good. It is, however, a charged object not only attracts small bits of paper, but it can also attract or repel other charged objects. It is found that two charged objects having like charges repel each other. इसको अंडरलाइन कर सर लीजिए। तो बेसिकली अगर हम दो रूलर्स को ऐसे करेंगे तो साथ में रखेंगे वो रिपेल होंगे। यस, कैसे नहीं कुछ नहीं, मैं ट्राई कर सकती हूँ एक बार? नहीं अभी घर पे करूँ? ओए सर मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा सर आपसे पूछती हूँ, सर इनका एटम्स में प्रोटॉन से न्यूट्रॉन मिलता है। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हाँ बिल्कुल, न्यूक्लियस के अंदर दे क्योंकि डू इसमें वो भी अट्रैक्ट प्लस ईच अदर। माइनस करता है। नहीं वो प्लस माइनस But नहीं, sir, न्यूट्रॉन तो neutrons are- जीरो होता है ना। न्यूट्रॉन्स aren't हाँ, charged. न्यूट्रॉन माइनस होता है तो सब वो So can I ask you something? It's not subject related, but why don't protons repel? बस पता नहीं Why don't protons repel inside the nucleus and the minus minus and we first know what Sir, one because minus sir, repels and सर आप उससे बात करते हो ना, किससे? आप राहुल सर से बात करते हो ना रेगुलर बेसिस opposite पे? attracts. मैंने बोला था क्लास के मतलब जो उन्होंने समझाया वो मुझे समझ नहीं आया। किसने? मैंने सुना भी था उन्होंने क्या समझाया था, वो बैकपैक नहीं वो चीज जो एक्सप्लेनेशन तू चाहती है ना, वो अभी तेरे काम तो समझ नहीं पाएगी, बट ऐसे समझो कि न्यूक्लियस में जब दोनों रहते हैं ना, दे आर प्लेस्ड इन वेरी स्मॉल रीजन। ठीक है। वो दोनों एक साथ साथ घूमते रहते हैं तो फिर वो एक दूसरे से दूर होते रहते हैं। सर ने बोला कि न्यूक्लियस बहुत टाइटली बाउंड होता है, उसमें कुछ अलाउ नहीं करता है जाने के लिए। तो फिजिक्स क्लास सर ने बोला था कि प्रोटॉन से एक दूसरे के पीछे स्मॉल डिस्टेंस पर एक दूसरे से दूर जाते जाते एक दूसरे वो दोनों में पास आ गए। क्या क्या फिर से? सर बोला था न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन्स क्योंकि प्लस प्लस है तो वो रिपेल होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी हम एक दूसरे से रिपेल होते हैं, तो ऐसे एक दूसरे से रिपेल होते होते एक साथ आ जाते हैं। मैंने सुबह में देखो सर ने कुछ नहीं बोला, सर ने यही बोला था क्योंकि बहुत टाइटली बाउंड होता है, इट इज नॉट लेटेड टू हैपन इनसाइड। फिर आप सर ने क्या कार्ड लूप मंडे मंडे को पूछिए मंडे को वेंसडे को क्लास होगा। तो मंडे को बोला अरे छी यार वेंसडे को क्लास होगा। वेंसडे को पूछोगी ना? ट्यूसडे मंडे आई सेड वेंसडे सर क्लास टीचर आने अरे नो टेबल इतना कैसे आया टेबल इतना कैसे आया हाँ सुनिए, अच्छा लेक्चर खत्म हो गया, इसमें ये अंडरलाइन कर लो, फाउंड दैट टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रिपेल, सॉरी न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल इसलिए नहीं करते हैं। हाँ
वहां पर एक अलग टाइप का फोर्स भी ऑपरेट करता है अपार्ट फ्रॉम दिस नॉर्मल रिपल्सन। क्या हुआ? आपको बोलने देगी तब बोलूंगा ना। यहाँ पर लिखा हुआ है नाम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। दे ऑपरेट इन दैट रीजन which are much more stronger than the repulsion between the proton and proton. रुक सॉरी क्या है ये? चुप। क्या है ये मतलब? सर एक सेकंड ना, क्या हुआ? पीछे लाओ क्या? क्यों? नहीं सर ऐसे ही क्या कर रही है? क्या लेना है तेरे को? क्या करना है? ओए, तुम लोग यहाँ गेम खेलने बैठ रहे हो? नहीं, लेक्चर ओवर हो गया, अब निकलिए आप लोग। मैं अभी डाल दे रहा हूँ मैसेज। यस।